हे गाइस, तो अपना नेक्स्ट वीडियो है टॉप 10 मूवीज ऑफ ऑल टाइम। में हमेशा से ये मतलब, हालांकि ये बहुत सब्जेक्टिव है। किसी को कुछ मूवीज पसंद आती हैं, किसी को कुछ मूवीज पसंद आती हैं। पर वॉच मोजो को, जो कि मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, एक लगभग 9 साल पुरानी मूवी है। इसमें इन्होंने इनकी अपनी एक लिस्ट है। अब देखते हैं इन्होंने किस पैरामीटर पे इन मूवीज को सिलेक्ट किया है, टॉप 10 मूवीज। क्योंकि मैं भी एक काइंड ऑफ मूवी होलिक या सिनेमा होलिक कह सकते हो। हूँ। तो आई वुड लव टू से कि इनके हिसाब से टॉप 10 मूवीज कौन सी है। सो लेट्स बिगिन। These are the films that made Hollywood great. ओके। It's ऑफ कोर्स, नो डाउट, नो डाउट। Welcome to WatchMojo.com, and today, in this installment of our series on the greatest movies of all time, we're counting down our picks for the top 10 movies of all time. This is a tasty burger. This final video culminates our best movies of all अच्छा, time इसका series क्वालिटी ऐसे ही by रहेगा। drawing from the number पुरानी one वीडियो है or क्योंकि number two ranked movies in each decade. थोड़े पिक्सल These movies are मैच है। selected based on their iconic status, critical movies in each decade. These इस movies are डेकेड। selected ओके। based on their ओके। iconic status, critical acclaim, box ओके। office success, and ओके। watchability, and not ओके। what your film studies professor or most artsy movie critics would pick. ये तो You मेरी voted फेवरेट in है यार। droves, we researched till तीनों the पार्ट। cows came home. It's now time for बैक the टू द mother फ्यूचर। of all lists. Grab your ठीक है popcorn, भाई। dim the lights, and action. I love the smell of napalm in the morning. Number 10, Apocalypse Now. every ओके। minute I stay in this room, I get weak. मैं यार इन मूवीज को दोबारा एक बार देखूंगा अभी। मतलब दोबारा इन द सेंस कि मतलब दोबारा देखूंगा कि जो मेरी लिस्ट जिनको मैं नहीं देख चुका हूँ, क्योंकि कुछ तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ किस बेसिस पे इनको टॉप 10 में रखा है। इस मूवी का मैंने नाम नहीं सुना था। क्या सुना था? एपोकैलिप्स नाउ। Weaker. And every minute Charlie squats in the bush, he gets stronger. With cinema legends like Martin Sheen, Robert Duvall, and Marlon Brando in the lead roles, Apocalypse Now crackles with scene after scene of horrifically and masterfully executed death and destruction. ओ भाई। Mirroring Joseph Conrad's novel Heart of Darkness, Francis Ford Coppola's gritty, Oscar nominated Vietnam War epic follows a group of ओके। soldiers tasked with assassinating a rogue colonel. They told me that you had gone totally insane. But the result is less a journey about the horrors faced in the trenches and more about the shadows of the soul. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Number 9, The Wizard of Oz. ओके। द विजेड ऑफ ओज का अभी हाल फिलहाल में भी शायद कोई मूवी है, जिसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो स्पाइडरमैन का दोस्त होता है, हैरी। हैरी ना, आई गेस। वो भी है, वो है इस मूवी में, आई गेस। वो शायद 2015 2016 की मूवी है मेरे ख्याल से। खुशी का ये। Pretty, and your little dog too. With L. Frank Baum's universally appealing story as its backbone, this Technicolor masterpiece transcends age and race to tell the coming-of-age story of a young Kansas girl who dreams of a land somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. Though it's now considered one of the most iconic films in Hollywood history, Wizard was not commercially successful upon its release. Put 'em up, put 'em up. However, its mix of timeless music, comedy, and a relatable moral has made this a film all parents recommend to their children and enjoy watching with them. I can't वो तो लगभग हर मूवीज के साथ है कि जिस टाइम रिलीज होती है, ऐसा बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज के साथ भी है जो एक्चुअली में काफी अच्छा डिजर्व करती थी, काफी कुछ डिजर्व करती थी, काफी सक्सेस डिजर्व करती थी। जैसे स्वदेश हो गया, या इवन कॉमेडी में भी देख लें तो अंदाज अपना अपना हो गया। आई गेस जो कल क्लासिक कॉमेडीज हैं, जैसे हंगामा है, शायद हंगामा के बारे में मुझे नॉट श्योर कि उस टाइम वो अच्छा कमाई थी या नहीं। पर आज के टाइम में तो हंगामा बहुत अच्छा, मतलब काफी जब भी आती है लोग लगभग उसको देख हर बार देखते ही एंजॉय करते हैं।
इतना टीवी पे आती है। पर मेरे ख्याल से उस टाइम पे शायद उतना आई डोंट नो, मतलब एवरेज कलेक्शन हुआ था, ऐसे कुछ हुआ था। ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, फिर बाद में लोगों को रियलाइज होता है कि यार नहीं, ये अच्छी मूवी थी। स्वदेश तो मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि सब बहुत गलत हुआ, वो मूवी बहुत कुछ डिजर्व करती थी, मेरी मतलब ऑल टाइम फेवरेट है। Oh, don't you know? That's Red Butler. He's from Charleston. He has a most terrible reputation. Number 8, Gone with the Wind. He looks नाम as if he सुना knows what I look like without my shimmy. How? Painting a romanticized picture of the war-torn South before, during, and following the Civil War, David O. Selznick's Gone with the Wind presents viewers with a strong female heroine in search of control. As God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live है। through मिली this. बॉबी ब्राउन, राइट? अगर इस फ्रेम से देखे तो वोइला बिल्कुल लग रही है ये मिली बॉबी When ब्राउन। it's all over, I'll never be hungry again. Winning a record number of Oscars, including an historic one for African-American actress Hattie McDaniel, the film is beautifully shot, technically brilliant, and ambitious in scope. ओ 1930s में ये Ultimately, with all its romance and heartbreak, Gone with the Wind is a cinematic landmark that won't soon be forgotten. Frankly, my dear, I don't give a damn. I'm gonna go pinch a loaf. When I come back, this is all gone, all right? Number this is 7, my The personal Shawshank favorite। Redemption. मतलब थोड़ी स्लो है पर अच्छी That's है। exactly what they take. Based on Stephen King's novella, The Shawshank Redemption follows a man as he's carted off to jail for his wife's murder. I'm Andy Dufresne. Wife-killing banker. But rather than being a tale of despair and hopelessness, it's a story of fortitude, friendship, fidelity, and, of course, redemption. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away. And for the briefest of moments, every last man at Shawshank felt free. With Tim Robbins and Morgan Freeman working together to bring this story to life, this Frank Darabont film was not a runaway box office hit, but its positive reviews eventually ऑब्वियसली मैंने अभी जैसे कहा कि ऐसी बहुत सारी मूवीज थी जो उस टाइम लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पाए थे। इवन शोले भी मेरे ख्याल से, जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है पढ़ा है उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम में भी वो मूवी शुरू में शायद इतनी अच्छी नहीं थी, पर बाद में वो अच्छी हुई। मतलब बाद में लोगों ने रिव्यूज वगैरह दिए, बाद मतलब जो भी जर्नलिस्ट थे, मूवी जर्नलिस्ट वगैरह थे, उन लोगों ने अच्छा कहा, तब जाके लोगों ने उसको देखा था। बाद में काफी हिट हुई थी वो। popularity, and 7 Academy Award nominations ensured वो its spot in cinema history. And here we go. Number 6, The Dark Knight. Hi. Dark, twisted, and with अच्छा, a मेरा ये हमेशा सपना था कि मैं डार्क नाइट एक बार थिएटर में जाके देखूं, एंड थैंक गॉड। क्योंकि आ, उस टाइम में जब जब ये मूवी आई थी, उस टाइम में हम लोग तो यार, वी वर नॉट इवन अ टीनेजर, राइट? ओ नो, आई वाज टीनेजर, बट इतना थिएटर वेटर का इतना मतलब पास पास में इतना नहीं होता था, इवन दो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, पर इतना, और आई वांस मतलब थिएटर वगैरह में जाना इतना इतना कोई शौक भी नहीं था ना, इतने पैसे होते थे। पर जब से मूवी देखना शुरू किया, मतलब सीरियसली देखना शुरू किया, तब से हमेशा से एक सपना था कि थिएटर में एक बार जरूर देखना है। और फाइनली ये इसी साल अभी लास्ट आई गेस जुलाई में, जब ओपनहाइमर आई थी, उससे 2-3 दिन पहले ही द डार्क नाइट भी लगाया गया था पीवीआर पे। तो भाई मजा आ गया यार, वो एक्सपीरियंस लिटरली जिसने उस टाइम में देखा होगा ना 2008 में, उसका तो मतलब लेवल ही है, मतलब अलग ही सातवें आसमान पे हो। ठीक है, तो यार मजा आ गया मतलब इसको देख के। depth not present in most comic book movies. This second film in Christopher Nolan's Batman franchise redefined the genre and appealed to both comic book fans and the general public. Never start with the head. The victim gets all Mhm. fuzzy. He can't feel the neck. See? Tracking the Caped Crusader as he battles the infamous Joker, The Dark Knight blurs the lines between superhero and supervillain, painting each as a complex and embattled character. I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. With a standout Heath Ledger performance that won the actor a posthumous Oscar, Batman's story was given a decisively gritty sequel.
and one that surpassed the original. Why so serious? Laugh it up, fuzzball. Number 5. Star Wars Episode 5, The यार Empire स्टार Strikes वॉर्स Back. तो मैंने देखी ही नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स हैं यार, पता नहीं कहाँ से देखता हूँ। He told me enough. While the लेकिन देखना first तो है film एक in बार। George Lucas's Star Wars saga was a fun space adventure, the second is much darker and more emotional. No. I एक बार देखना तो है यार स्टार वॉर्स। Considered by many as the strongest of the 3 original films, Empire is not only a feast for the eyes with its expensive and extravagant visuals, it's also a timeless story to which we can all relate. Aside from the distant planets, lightsabers, and alien creatures, that is. R2! Innovative and creative, this chapter in the life of Luke Skywalker and friends is epic filmmaking at its finest. That boy is our last hope. No. There is another. We all go a little mad sometimes. Number 4. Psycho. Oh, we have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. There are few scenes as memorable and influential as Alfred Hitchcock's shower incident, with its many cuts, many angles, and subtle hints of violence and nudity. और But to downplay the rest of Psycho would be fatal. This thriller is Hitchcock's masterwork. Well, a boy's best friend is his mother. Critics were initially divided in their opinions on the film, but Psycho eventually earned 4 Oscar nominations. Shifting the norms of acceptable on-screen violence and sexuality, this movie surprised everyone who saw it. But even if you know the secrets of Psycho, it's as terrifying as ever. They'll see. बताइए। They'll see and they'll know and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. भाई देखना बनता है यार ये। बवाल लग रहा था यार। Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? यार पल्प फिक्शन ना मैंने पता नहीं देखने की कोशिश की थी यार, मतलब 15-20 मिनट लगभग देखा था मैंने, पर यार मैं लिटरली बोर हो गया अब। लेकिन आई मीन जज कर सकते हो, आई डोंट नो, बट मुझे पसंद नहीं आई थी यार। स्टार्टिंग में 15-20 मिनट देख के बहुत बोरिंग लग रहा था मुझे। आई डोंट नो, बहुत क्लासिक बोली जाती है, आई नो। Number 3. Pulp Fiction. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped us? What's happening? Oh, man. Is this film driven by its standout performances? Yes. So he hid it. In one place he knew he could hide something, his ass. Is it driven by its extreme violence? Of course. But more than that, Quentin Tarantino's Oscar-winning Pulp Fiction is driven by subtle, articulate, and pop culture-heavy dialogue. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. The nonlinear plot follows an interwoven group of colorful characters in intricate detail. With such dark humor, you'll laugh in spite of yourself. If you're all right, then say something. Something. With a soundtrack that punctuates the mood and sound bites you'll be quoting for years, Pulp Fiction has everything necessary to make you watch it over and over. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Rosebud. Number 2. Citizen Kane. I sympathize with you. Charles Foster Kane is a scoundrel. His paper should be run out of town. A committee should be formed to boycott him. It's a wonder that a first-time director was able to cobble together what is now considered one of the greatest films ever made. But with Citizen Kane, Orson Welles did exactly that. What were Kane's last words? Do you remember, boys? Yes, swear. Welles co-wrote, directed, produced, and starred in this film, which tells the life story of a wealthy media mogul, mostly through flashbacks. I expect to lose $1 million next year. You know, Mr. Thatcher, at the rate of $1 million a year, I'll have to close this place in 60 years. To create his Oscar-winning masterpiece, Welles employed innovative and groundbreaking cinematic and storytelling techniques, creating a layered film that appeals to both cinephiles and the general सुना नहीं मैंने public इस मूवी alike. का नाम। बाकी का तो शायद कभी कभी सुना भी है, पर इसका तो नहीं सुना।
Before we unveil our pick for the best movie of all time, here are a few honorable mentions. My calculations are correct. यार ये When ऑनरेबल this baby मूवीज hits में नहीं 88 जाना miles per चाहिए, ये तो hour, टॉप 10 में आना ही you're चाहिए। gonna see some serious तो shit. क्या क्लासिक मूवी थी यार ये, इसका भी Of बहुत all नाम the सुना gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum. I can't carry it for you. But I can't carry you. पता नहीं, मतलब इंडियन फैंस को पसंद आती है ये मूवी, आई नो, पर पता नहीं यार, मुझे तो यार अगेन लाइक पल्प फिक्शन, इसका हालांकि जॉनरा बहुत अलग है। 20-25 मिनट की भी मैंने देखी थी इसकी, मतलब मजा नहीं आया मुझे। Come on! ओ 1927 में Michael Francis, Ritzy, do you renounce Satan? Number 1, The Godfather. Luca Brazzi held a gun to his head, and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. Shedding light on the mafia world like few films before or since, the Best Picture-winning Godfather follows the Corleone family as the reins of the business are passed from Don Vito to his son Michael. You'll set up a meeting with someone that you absolutely trust, guaranteeing your safety. And at that meeting, you'll be assassinated. In this film and its 1974 sequel, Francis Ford Coppola crafts a world that allows us to care for and even identify with men who are fundamentally bad guys. I'm gonna make him an offer he can't refuse. And virtuoso performances by greats like Brando, Pacino, and Duvall elevate the subtle writing and graphic violence to make The Godfather a truly great film. Leave the gun. Take the cannoli. Do you agree with our list? What's your favorite movie of all time? For more thrilling यार top बैक 10s टू द published फ्यूचर every भी day, होनी be चाहिए sure to यार, subscribe to watchmojo.com. ओके। हाँ ऐसे तो खैर बहुत सारी मूवीज टॉप 10 में होनी चाहिए, पर तो आपको इनमें से कौन सी मूवी लगी जो बहुत ओवररेटेड लगती है? यार देखो, गॉडफादर मैंने देखी है, सेकंड पार्ट नहीं देखी है, फर्स्ट देखी है। आई मीन ओके, इट्स गुड, उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी रही होगी। पर अगर मैं आज देखता हूँ तो आज के हिसाब से कुछ इतनी खास मतलब मुझे नहीं लगी, मुझे बहुत ज्यादा ओवररेटेड ओवर हाइप लगती है मूवी। जस्ट लाइक द बुक वॉर एंड पीस, वो बुक भी कुछ ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा ओवर हाइप, बहुत ज्यादा नुकसान बात बात करते हैं, पर इतनी खास वो बुक भी नहीं लगी मुझे। ऐसी ही ये मूवी है डार्क नाइट। इनफैक्ट डार्क नाइट को अगर टॉप पे रखें तो वो फिर भी मानी जाएगी। इस लिस्ट में इंसेप्शन क्यों नहीं है, इंटरस्टेलर क्यों नहीं है, पता नहीं। हालांकि ये अलग डेकेड्स इन्होंने लिया है, तो शायद उसको देखते हुए इन्होंने वो किया है। आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, पर बैक टू द फ्यूचर तो होनी चाहिए थी यार, मतलब साई-फाई में तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। हो सकता है इन्होंने फिर अलग अलग जॉनरा वाइज लिस्ट बनाई होगी, जिसमें कि टॉप 10 साई-फाई मूवीज ऑफ ऑल टाइम होगा, तो उसमें उन्होंने फिर डेकेड वाइज ले लिया होगा। हाँ वो भी हो सकता है, टॉप 10 में कितनी मूवी दिखेंगे, बट स्टिल उसमें तो कुछ एक आध, जैसे पल्प फिक्शन, मुझे पता नहीं, मुझे तो अच्छी नहीं लगी थी जितना मैंने देखा था। और भाई जैसा ये लोग बाहर के गोरे हैं, उनको इनके हिसाब से कुछ चीज़ें पसंद आती हैं। तो फिर बाकी आप बताएं, आपको इनमें से कौन सी मूवी अच्छी लगती है, कौन सी मूवी आप देखोगे? इनमें से मैं साइको देखना जरूर पसंद करूंगा, मुझे साइको अच्छी लगी, इसका स्टोरी लाइन कुछ अच्छा लगा मुझे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, या कौन सी मूवी आपको बहुत पसंद है। मुझे डार्क नाइट सबसे ज़्यादा पसंद है इसमें से, और सारी मूवीज़ मैंने देखी भी नहीं है। शॉशैंक रिडेम्पशन देखी थी, और भी 2-3 मूवी थी जो मैं देख चुका हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।